जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत रिएक्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और आदित्य L1 के सफल लॉन्च के बाद पूरे विश्व में इसी की चर्चा है। पूरा वर्ल्ड मीडिया इसरो पर रिएक्ट कर रहा है और बड़े बड़े YouTube चैनल भी इसको लेकर वीडियो बनाए हैं। तो आज ऐसे ही एक YouTube चैनल watchmojo.com, जिसका कि 25 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, उसके एक वीडियो पर हम रिएक्ट करेंगे जिसका टाइटल है टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट इसरो। और ये इंग्लिश में वीडियो है, तो बीच बीच में हम आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the top 10 facts about Isro. People are applauding. Let us all wait to hear. For this list, we'll be looking at the best, most interesting, and most important facts about the Indian Space Research Organization, ISRO. And if science and space is kind of your thing, then be sure to subscribe to our dedicated channel Unveiled right after this. तो दोस्तों, इसने कहा कि हम इसरो के टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो कि अननोन है। और इसका एक चैनल है डेडिकेटेड साइंस के लेकर। अगर आप साइंस पर इंटरेस्टेड है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। Number 10. It started with one small step. ISRO formed on August 15, 1969, less than a month after the Apollo 11 moon landing. While NASA was capturing headlines all over the world, ISRO... तो दोस्तों, इसने कहा कि इसरो 1969 में फॉर्म हुआ, कि जो कि गलत जानकारी है। हाँ, उसका नाम इसरो पड़ा था 1969 में, पर भारतीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन 1962 में ही फॉर्म हो गया था। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। ISRO was setting out its stall. The scientist and astronomer Vikram Sarabhai is remembered as the father of Indian space travel. He became the chairman of the Indian National Committee for Space Research. He's widely credited as the driving force during the organization's earliest moments, having previously campaigned for and fronted an earlier setup, the Indian National Committee for Space Research. Although Sarabhai unfortunately died early in 1971, he'd built the foundations, and ISRO's first success came via satellite. India, in partnership with the Soviet Union, launched its first satellite, Aryabhata, in 1975. Fast forward to today, and ISRO runs one of the strongest satellite fleets in the world. Vikram Sarabhai's vision has been realized within a very तो दोस्तों, इसने विक्रम साराभाई के बारे में बात किया, द लेजेंड ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम, और कहा कि वो बहुत जल्द ही मर गए पर अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गए। और भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च आर्यभट्ट के बारे में बात किया है। चलिए आगे सुनते हैं। short span of time. Number 9. Small budget, big goals. In 2022, ISRO funding was just short of $2 billion, which sounds like a lot until you compare it to NASA. ये देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दिखाया जा रहा है इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन है, बीच में चाइना भी है। देखिए कितना अंतर है इसके बजट पर फिर भी इसरो पूरी दुनिया में अपना धाक जमाने में सफल है। $4 billion in that same year. China's CNSA receives around $12 billion. The European Space Agency has around $8 billion. ISRO never gets even close to the expenditure of its rivals, and yet it still ranks as one of the... देखिए, इसने अभी वही कहा, इसरो का बहुत ही कम पैसा मिलता है नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी के मुकाबले, पर फिर भी इसरो विश्व में अपनी एक धाक जमाने में सफल हुआ। most successful and influential space agencies on the planet. What the ISRO and India's space sector is most proud of is what they've achieved with so little. Today, that's partly thanks to a modern approach to partnering with private enterprises, with the Indian government running a dedicated branch to directly link ISRO to the private sector. India's first Mars mission cost less than the film The Martian. But ISRO... देखिए, ये एग्जांपल बार बार दिया जाता है कि इंडिया का मार्स मिशन, मार्सन जो फिल्म था, उससे सस्ता में ही मार्स पर पहुंच गया, और ये फिल्म बना रहे धरती पे मार्सन, जिसका कि उससे ज्यादा खर्च है। Performing beyond its means is also backed into its ethos. During a speech in 1968, Vikram Sarabhai conceded that ISRO didn't have the, quote, fantasy of competing with wealthier nations, but he also pledged that it would play, quote, a meaningful role in the application of advanced technologies to man and society, end quote. Number 8. Trouble on the Moon. Chandrayaan 1 is India's first mission to the moon, launched by India's National Space Agency, the Indian Space Research Organization. अब ये चंद्रयान 1 के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद चंद्रयान 2, उसके बाद देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में बात करेगा। देखते हैं क्या कह रहा है ये। For every international space agency, a journey to the moon is something of a rite of passage. But for ISRO, that journey has been far from plain sailing. The Chandrayaan program is India's primary lunar initiative. It was announced in 2003, and Chandrayaan 1 was launched in 2008. The ISRO successfully launched Chandrayaan 1 on 22nd October 2008. It was a lunar orbiter designed to move around the moon, equipped with one moon impact probe, which was successfully deployed. However, the orbiter suffered a number of technical difficulties, and although the mission had been planned for 2 years, it was ended after just 312 days. Next came Chandrayaan 2, which included a... चंद्रयान 1 के बारे में बता रहा था कि
कि जो उसका ऑर्बिटल था उसका कनेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था जब भारत चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। पर ये बताना भूल गया कि चंद्रयान 1 ही चांद पर पानी का खोज किया था। उसके बाद नासा भी इसको सत्यापित किया था। Another orbiter and rover ready to land and move on the surface. We have ignition. Launched in 2019, the orbiter worked fine, but the rover irredeemably crashed following a reported software failure. Number 7. Lunar redemption. After the first and second launches, there may have been some anxiety surrounding Chandrayaan 3, but ultimately, there was no need to worry. Launched in July 2023, it made a lunar orbital insertion on August 5th of that year. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम It again carried a probe made for the surface, but this time was able to deploy it successfully. The Pragyan rover, which translates as the Wisdom rover, successfully landed at the lunar South Pole on August 23rd. It marked the first time that anyone had made a soft landing in this particular region of the moon, and was then tasked with conducting a wide range of experiments to learn more about its new home. इसके बाद ये चंद्रयान 2 के बारे में बताया कि इंडिया सफल नहीं रह पाया था सॉफ्ट लैंडिंग में, पर इसका ऑर्बिटल सफल रहा था, वो अभी तक भी घूम रहा है। उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बारे में बता रहा है कि चंद्रयान 3 सफल रहा और ये फर्स्ट कंट्री बना जो कि साउथ पोल में लैंड किया। उसके बाद ये प्रज्ञान रोवर के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर कौन सा कैमरा, कौन सा इक्विपमेंट है। Notably, and in honor of ISRO's founding father Sarabhai, the vehicle that ferried the rover for both Chandrayaans 2 and 3 was named Vikram. और फिर ये कह रहा है कि जो विक्रम लैंडर का नाम है वो विक्रम साराभाई के ऑनर पे दिया गया। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों में लैंडर का नाम विक्रम ही था। तो ये कह रहा है कि जो भारत के लेजेंडरी थे विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है। Number 6. Mars in 1. For all the issues that is देखिए, एक झटके में, एक ही प्रयास में हम मार्स पर पहुंचे थे, जो विश्व का पहला देश बने थे हम, जो कि एक ही प्रयास में मार्स पर पहुंचे हैं। उसके बारे में ये क्या कहता है सुनते हैं। There have been no such problems with Mars. In the 21st century, it seems like everyone wants to go to Mars, but ISRO is one of a tiny few that have actually managed it. The Mars Orbiter mission, otherwise known as Mangalyaan, was launched in November 2013 and began busily circling the red planet after orbital insertion on September 24th, 2014. When it arrived, it made ISRO just the 4th space agency to reach Martian orbit, after Russia's Roscosmos, NASA, and the European Space Agency. The Mangalyaan spacecraft entered the red planet's orbit on Wednesday after a journey of more than 10 months. What's particularly impressive, however, is that ISRO is the only one so far to achieve it on the first attempt, while everyone else has a history pitted with fail. और दोस्तों, इसरो मार्स पर चाइना से पहले पहुंचा है। इंडिया से पहले मात्र अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन ही मार्स पर पहुंचा था। Mars missions, ISRO has a 100% success rate. The first time a space agency's managed to do it on their maiden mission. Of course, also they've done it at a fraction of the cost. Number 5. ISRO stares at the sun. The year 2023 will go down as a pretty important one in the annals of ISRO. First Chandrayaan 3 and then Aditya L1. ISRO is now going. तो दोस्तों, इसरो का सक्सेस रेट 100% था मार्स पर। कोई भी कंट्री बिना फेल्योर रहे मार्स पर नहीं पहुंचा था। और इसके बाद ये कहा इसरो का आदित्य L1 मिशन के बारे में, इंडिया इसरो स्टेयर्स एट सन, इसरो सन की ओर देख रहा है। आइए देखते हैं क्या to launch India's first mission to understand the sun. Aditya L1 is a solar observatory. If the mission continues as planned after launch in September 23, then it will position itself at a location in space known as the L1 Lagrange point and intricately monitor the sun from there. The L1 Lagrange point is an area where the gravitational influences of the sun and Earth reach an equilibrium, allowing for controlled and reliable positioning. It's almost 1 million miles away from our planet, though. The probe itself will primarily study space weather, solar flares, and coronal mass ejections. Although the sun is some 93 million miles away from us, these phenomena can have a major impact on Earth. It will be continuously observing the solar surface. Number 4. ISRO is fixing fuel. No matter what, rocket fuel has been a constant puzzle for any space mission throughout history. In short, to get a spacecraft off the ground, you need... दोस्तों, इसने आदित्य L1 मिशन के बारे में बताया कि लैग्रांज पॉइंट 1 पर जाकर ये अपना आदित्य L1 मिशन रह जाएगा, जो कि धरती से 1.5 मिलियन दूर है। A lot of fuel, but to carry all of that fuel, you need more fuel, and so on. 1, 0, and lift off of Space Shuttle Atlantis. Which is why it traditionally takes huge machines to get even a tiny payload into the sky. All space agencies are hoping to change that. In ISRO's case, the answer could lie with ISROcene, which the Indian authorities describe as a rocket-grade version of kerosene and an alternative to conventional hydrazine rocket fuel. It's hoped that ISROcene will be much more efficient than past iterations. Meanwhile, India is experimenting with electronic propulsion systems, with hopes that it will soon be sending up fully electric satellites at least. Number 3. और दोस्तों, ये बता रहा है कि इसरो का फ्यूल में भी बहुत महारत हासिल कर लिया है और भारत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर भी वर्क कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से
और सैटेलाइट्स को आसमान में पहुंचा देगा। ISRO will travel to hell. In the world of space travel, the road to hell is paved with anything that can get you to Venus. The second closest planet to the Sun is also widely dubbed Earth's evil twin on account of how toxic and deadly it is. It's full of clouds that rain sulfuric acid and whip around the planet at speeds up to 224 miles per hour. Venus is hot, really hot, with surface temperatures around 900 degrees Fahrenheit or 475 Celsius, largely thanks to a dramatically runaway greenhouse effect. And yet, India wants to pay it a visit. Venus is so inhospitable, neither humans nor spacecraft are able to survive the planet's surface. The Venus Orbiter mission, otherwise known as Chandrayaan, is a planned 4-year... दोस्तों आगे ये इंडिया का शुक्रयान के बारे में बता रहा वीनस, जो कि इंडिया वीनस पर अपना ऑर्बिटल छोड़ना चाहता है। ये बता रहा वीनस का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही डेडली है, वहाँ पर ना कोई इंसान ना कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं टिक पाएगा, कोई सैटेलाइट भी, मतलब अगर वहाँ पर लैंडिंग करना जो चंद्रयान की तरह वहाँ पर लैंडिंग करना इम्पॉसिबल, वहाँ पर बस ऑर्बिटल ही भेजा जा सकता है। तो इंडिया शुक्रयान भी भेजने वाला है आने वाले समय में। Exploration set to launch in late 2024 at the earliest. Through it, ISRO will study the Venusian atmosphere and the specific composition of this scorching, rocky world. Other agencies have been to Venus before, and many have failed. So could ISRO buck the trend again? Chandrayaan-1 will... और बता रहा कि दूसरे देश भी वीनस पर ट्राई किए बहुत बार, काफी बार फेल भी हुए, तो देखते हैं इसरो सफल होता है कि नहीं वीनस पर अपना ऑर्बिटल ले जाने में। Be able to carry 100 kg and around 16 Indian. Number 2. ISRO is building its own space base. The International Space Station is perhaps one of humankind's greatest ever achievements. तो दोस्तों ISS की कहानी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर इंडिया को इनविटेशन भी नहीं भेजा गया उस समय, क्योंकि इंडिया कंडीशन वैसा नहीं था। तो आज इंडिया उस कंडीशन में आ गया कि अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। 2030 में इसका काम शुरू हो जाएगा, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। But with rumors that the ISS could soon be decommissioned, the landscape in near-Earth orbit is changing. ISRO actually isn't involved with the ISS program, and there's never been an Indian astronaut on board. But there are plans for ISRO to build its own station starting in the 2030s. A brief outline was announced in 2019 by the then ISRO chair, K. Sivan. As a long-term plan, we are planning to have the space station by India, our own space station. If plans go ahead, then India's space station will weigh around 20 tons to start with, and will be able to host up to 3 people for up to 20 days at a time. With reports that were also... तो दोस्तों इंडिया एक ही बार उतना बड़ा तो स्पेस स्टेशन नहीं बना सकता है, तो एक साथ 3 व्यक्ति रह सकता है, ऐसा स्पेस स्टेशन भारत बनाने जा रहा है। On the brink of private space stations too. It really is all change up there. Orbital Reef is a full-fledged commercial space station. Before we continue, be sure to subscribe to our channel and ring the bell to get notified about our latest videos. You have the option to be notified. तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले इनके चैनल को, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। For occasional videos or all of them. If you're on your phone, make sure you go into your settings and switch on notifications. Number 1. The Vyomanauts are coming. Of course, before that space-based dream can be realized, ISRO needs a human presence in space. All of its great successes so far have been uncrewed, remotely controlled probes and landers. But that will change with Gaganyaan. The key... अभी बता रहा है कि अपना गगनयान मिशन के बारे में इंडिया अब स्पेस में अपना नागरिक भी भेजने वाला है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा ही माइलस्टोन होगा। Vehicle in the Indian Human Spaceflight Program. This mission will launch from the Sriharikota spaceport in Andhra Pradesh. It will carry a 3-man team of Vyomnauts. While the schedule was initially delayed due to the pandemic, ISRO does have a clear pathway to getting people into orbit. Gaganyaan-1 in 2024 will be an uncrewed test flight. Gaganyaan-2, again in 2024, will carry a humanoid robot. Gaganyaan-3, tabled for 2025, will carry 3 crew members. The manned mission will take place. Our current schedule is end of 24 or early 25. तो दोस्तों गगनयान मिशन के बारे में बताया गया कि 3 होगा, 3 मिशन, गगनयान-1, गगनयान-2, गगनयान-3, और लास्ट में तीसरे मिशन में इंसान को ले जाया जाएगा, क्योंकि टेस्ट करना जरूरी है। अगर कोई गड़बड़ी हो जाएगा तो मानव को नुकसान पहुंच जाएगा, जो कि भारत जैसे देश में बहुत ही बड़ा बात होगा। अगर कोई स्पेस में जाता है नुकसान पहुंच जाएगा, इसीलिए इसमें 3 बार इसका ट्रायल होगा, गगनयान-1, गगनयान-2, गगनयान-3। It will be the first time that ISRO has ever sent humans into space, and those pioneers will be known as Vyomanauts, not astronauts, with Vyoma being the Sanskrit word for sky. It is intended to send 3 astronauts to space for a minimum. व्योमा एस्ट्रोनॉट्स नहीं कहा जाएगा, हमारे जो स्पेस में जाएंगे व्योमेनॉट्स कहा जाएगा, जो कि व्योमा संस्कृत शब्द है आकाश को लेकर। Of 7 days. Did you enjoy this video? Check out these other clips from WatchMojo and be sure to subscribe and ring the bell to be notified. दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन? ऐसे ही और रिएक्शन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि इंग्लिश में अगर भारत के बहुत सारे दर्शक नहीं देख पाते तो उनके लिए हिंदी में भी अनुवाद करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।